Okay. So very good evening to the CA finalists of this country. आप लोगों ने दिवाली पे जो आतिशबाजी मचाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप सब अपने आप को पीठ थपथपा सकते हैं. दैट Recording in progress. सो congratulations to all the CA finalists. You had a great Diwali and you celebrated the Diwali not for yourself but for our family also. सारा एफर्ट, सारी मेहनत आप लोगों की रंग लाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. So many congratulations to all the pass outs who are there attending this, or rather watching the recording of this. Correct. So God bless all of you. I would say my regards to all of you, so that you can take things further. And I know there are students from May 24 exams, September 24 exams, November 23 exams. All of them have done some hard work and they have realized the value of everything, that how things come up. So rather than taking much of your time, मेरे पास एजेंडा में कुछ चार पांच चीज़ें हैं. मैं पहले वो चार पांच चीज़ें पूछूं या बताऊं, आपके मन में एजेंडा में क्या क्या है वो आप एक मिनट में मैसेज ओपनिंग फॉर ऑल कर देता हूं, दे दें, सो दैट वी नो दैट व्हाट वी आर सपोज टू डिस्कस. मैंने आपको लिखा था हाउ टू अप्लाई फॉर बिग फोर, हाउ टू प्रिपेयर योर सीवीज, फाइनल की प्रिपरेशन का कैसे रहेगा, ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. बट इफ देर आर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज अदर देन दिस, उस पे आप अपनी मेथड अपनी डाल दीजिए. अप्लाई कैसे करना है बताऊंगा, सीवी ड्राफ्टिंग क्या है, डोमेन गाइडेंस क्या है, वो मैं बता दूंगा अभी आपको. सो आई विल बी टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट 1.5 hours विच आई एम स्पेंडिंग विथ यू. उसके अलावा कुछ, हाँ, विच टाइप ऑफ फर्म टू चूज, बिग फोर, मिड साइज, ओके. हाँ, M&A डिपार्टमेंट एंड इट्स स्कोप, ओके. एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ओके. मोस्ट ल्यूक्रेटिव डोमेन अकॉर्डिंग टू मी, ओके. सिटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, वाह रे वाह. Home city versus metro cities, all valid points. Let's take them one by one. Okay, so let me set the agenda for you. Sir, there would be following points in your mind. मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ जाएगा. ये पांच चीजें, छह चीजें मैं चमाना चाहता हूं आप लोगों के साथ. Have I listed all your requirements properly, beta? Just check. First is CV drafting. Where to apply, how to apply, metro, big city versus own city, final preparations and domains to apply. बराबर? Hello. First, you have to keep giving me a yes, no, yes, no. As usual, अगर आप मेरे students रहो, आपको पता है, I need that interaction, I need that response, and accordingly things go further. Okay? So, hmm, great. I can see some similar names. If some of you have been my students, if you can mention that your student ऐसा मैसेज डाल दे तो पता चल जाएगा मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी हैं. ओके, आदेश, काव्या, अक्षत, मयंक, लकी, सिमरप्रीत, मयंक, यशस्वी, प्रत्युष. ओके. हाँ 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 हाँ. मनल बुधानी, रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट. ओ, दैट आल्सो इज अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. ग्रेट. चलिए. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? नॉट योर स्टूडेंट, ऐसे भी तो होंगे कुछ. नॉट योर स्टूडेंट बट अटेंडिंग दिस सेशन.
ओके. ओके. Sai, good evening. This is Deepak. So I hope I'll do the justice if you have joined us for the first time. Great. Hmm. Okay, so the first thing is CV drafting. CV थोड़ा थोड़ा सबने बनाया होगा. 25 तरह के आप लोगों ने फॉर्मेट्स डाउनलोड कर लिए होंगे. नहीं करे हैं तो करना चालू कर लीजिए. बट CV ड्राफ्टिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, CV is not copyable directly. It is your definition. For example, Lucky will be a different person, Sai will be a different person, Ayurda will be a different person, Adesh, Astha, Jain, Astha Saxena, Akshat, all of you have your own identity. So you need to keep your four things in your mind. Number one, the content and the language of your CV, the structuring of your CV, quantification in your CV, and review your CV. So first of all, there is no specific format. A simple one pager which gives a introduction about you, और उसको पढ़ने के बाद the interviewer shall be able to visualize कि I want to meet him or meet her. Okay. So the content and language has to be clear. Fonts are to be clear. The structuring of your qualification has to be there. So have you got your notepad with you? So please type yes, notepad yes, notepad yes. ऐसा जल्दी से type करो. So I'll take it further. Or otherwise go and grab a notepad first of all. जल्दी से लेके आ जाओ. शुरू करूं? Good. So first of all, the structure of your CV should be something like this. A formal photograph. Please don't simply pull up your selfies and put it there. A formal photo. Formal photo बोले तो शर्ट में या सलवार सूट में या वो टी शर्ट के फोटो, दिवाली के फोटो मत लगाना. ओके. अरे हम तो सीएफ बने हैं तो अब हम दिवाली का ही फोटो लगाएंगे, ऐसा नहीं करना. A formal photo. Then you should have your name appearing here, your email ID and contact number here itself. बिकॉज ये दो चीजें सबसे पहले सामने होना चाहिए. बिकॉज इफ यू सेंड इट थ्रू एन ईमेल और अ फिजिकल वन, सबसे पहले देखना चाहिए कि सामने वाले से बात कैसे करना है मेरे को. हाउ विल आई गेट इन टच विथ हिम और हर. सो द ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन यू नीड टू हैव अ ऑब्जेक्टिव. इफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, वेरी गुड, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल सकते हो. बट फिर लिंक्डइन प्रोफाइल अभी उतनी रिच नहीं होगी तुम्हारी, बिकॉज तुम स्टार्ट कर रहे हो. है तो डाल सकते हो बट नॉट नीडेड. ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Then you need to, yes, Mayank Rai, a photo is important. When you go to bigger levels, you need to display to a person कि हाँ मेरा ये है, I am this person. Because most of the times जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो घोस्टिंग हो जाती है. नहीं तो उसमें घोस्टिंग मीन्स आपकी जगह कोई और इंटरव्यू दे रहा है. मुन्ना भाई टाइप्स शुड नॉट हैपन. ओके. द ऑब्जेक्टिव. ओके. सो द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव आर्टिकलशिप करनी है. दैट इज नॉट ओरिजिनली, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, बट दैट इज शुड नॉट बी रिटन. टू अक्वायर स्किल्स. अब ये जो मैं बोलूंगा ना, ये ऐसा कैसा नोट मत कर लेना और रट मत लेना. केवलानी ध्यान रखना, तेरी बहुत आदत है ये. टू अक्वायर स्किल्स फॉर द प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड डेवलप माय ओन स्किल्स ऑल्सो. कुछ इस प्रकार की एक लाइन, डेढ़ लाइन. चैट जीपीटी से मत उठाना, डायरेक्ट इंटरनेट पे मत ढूंढना. एक लाइन खुद के लिए देखो कि तुम करना क्या चाहते हो. बराबर. टू अक्वायर स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस इन द प्रोफेशन, in the CA profession. ओके. फिर एजुकेशन का स्ट्रक्चर याद रखना. योर लेटेस्ट एजुकेशन हैज टू बी ऑन द टॉप.
योर लेटेस्ट एजुकेशन हैज टू बी ऑन द टॉप। कई बच्चे 10th से चालू करेंगे, 10th 11th 12th नहीं चलना है आपको, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, 12th एंड 10th। ओके, एंड स्कोर डालना है, जैसे अगर दोनों ग्रुप के हैं तो 400 में से 600 आएगा, नहीं तो वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 तो वो 300 में से आएंगे। करेक्ट। तो ये नवंबर 24, मई 24 अगर है, करेक्ट। फिर सीए फाउंडेशन डिटेल्स, 12th का कौन सा बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, वट एवर बोर्ड यू हैव, करेक्ट। एंड देन 10th, so this is how your things have to come in. Then you have to go for academic achievements. Now academic achievements means optional. जरूरी नहीं है कि everybody has been a superstar in academics. So if you have no academic achievements, it's optional. So no need to put unnecessary. Now don't put an achievement that first prize winner of sack race in class 3. ये मत डाल देना, ये भी मत डाल देना, क्लास मॉनिटर, ठीक है ना, ये सब मत करना। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स, इफ यू हैव स्कोर्ड सम आईएमओ, ओलंपियाड्स में कुछ स्कोर किया हुआ है, 10th और 12th में आपको कोई रिकग्निशन मिला हुआ था, वो आप दिखा सकते हो एकेडमिक अचीवमेंट्स के अंदर। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के अंदर सबसे पहला तो आपका एक वो आईटी और ओसी हुआ होगा, करेक्ट। सो दैट आईटी ओसी completion should be there, and if you are versant with anything tally, excel, powerpoint or something, so that also you can add in technical skills. And if you have participated in co-curricular activities, for example if you have done a mock united nations, MUN किया हुआ है, debate किया हुआ है, sports activities में part लिया हुआ है, so all those things will fall in this category, MUN, debate, sports activities, etc. Okay, then finally your personal details shall be coming. Personal details, सॉफ्ट स्किल, काव्या क्या आती है अपने पास, सॉफ्ट स्किल में क्या होगा बताओ आप। आपकी सॉफ्ट स्किल सबसे पहले आपके सीवी से नजर आ जाएगी ना, आर यू गुड एट ड्राफ्टिंग समथिंग और नॉट। एंड बिना कोई मिले आपसे कोई आपकी इंटरपर्सनल स्किल आप अपने बारे में बखान कर रहे हो कि आई एम अ गुड इंटरपर्सनल पर्सन, ऐसा कैसे पता चलेगा। हाँ, आपने कोई टीम लीड की हुई है, टीम लीड, अब ऐसा वाला टीम लीडर इन स्कूल, अगर आपने स्कूल में कोई प्रिफेक्टोरियल पोजीशन ली हुई है, आप स्टूडेंट पोजीशन में थे, स्टूडेंट कमेटी के मेंबर थे, वो सब डालो। ये जेनरिक वर्ड काम नहीं आता, गुड एट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, वो चैप्टर में होता है। आपकी इंटरपर्सनल स्किल तो आपके बिहेवियर से दिखेगी ना। पर्सनल डिटेल्स में योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस एंड योर फादर्स ऑक्यूपेशन। काफी सारे बच्चे बोलते ये लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल है। दिस गिव्स द पर्सन एन आइडिया यू आर कमिंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। If your father is an engineer or a doctor or a lawyer or a chartered accountant or a businessman or a teacher or a professor, he will come to know कि इसके बेसिक्स क्लियर हैं, बराबर। सो फादर्स ऑक्यूपेशन लिखने में शर्म मत करना, और अगर किसी के पापा का सिर्फ बिजनेस है तो आपको लिखना चाहिए बिजनेसमैन, करेक्ट। और बिजनेसमैन की जगह एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हो आप। यू शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, करेक्ट। अक्षत, दिस इज व्हाट आई टोल्ड अ मिनट अगो, सेपरेटली सॉफ्ट स्किल्स लिख के मेंशन करने से कुछ नहीं होता। सॉफ्ट स्किल्स आपका सीवी देख के समझ में आती है कि आपकी इंग्लिश लिखने की आदत कैसी है, द वे यू आर प्रेजेंटेड योर थिंग्स, द वे यू आर राइटिंग योर ईमेल्स, यहीं से सॉफ्ट स्किल का इंडिकेशन है। सॉफ्ट स्किल्स आर इंटेंजिबल माय डियर, ओके। देन it can be a one page or two page. No, there is no need to include caste. Thankfully our CA institute does not recognize any reservation, and any of the articleship also will not be there. First of all, your CV can be a one page or two pages. Second, font size shall be 12. Use the font as Calibri or Times New Roman, correct. And it has to be in a PDF format. Please avoid Word file. रीजन, MS वर्ड का वर्जन सब लोगों के कंप्यूटर पे अलग अलग है। MS वर्ड खुलता नहीं है, खुलता है तो सारी की सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है,
ओके। एक्सेल टैली के लिए सर्टिफिकेट होना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेल एंड टैली, सिंपल। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियरेंस और आईटीओसी ट्रेनिंग है। आईटीओसी ट्रेनिंग की हुई है, मतलब बेसिक ऑफ वर्ड एक्सेल टैली आपको आता है, ऐसा माना जाता है बेटा। आपके ईमेल आईडी होना चाहिए समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी दीपक डॉट मूलचंदानी। अब ऐसा ईमेल मिलता नहीं है जनरली आपको आपका, तो ऐसे में आपने लिख दिया रोनित शाह 28 जीमेल चलेगा, पर ऐसा मत करना रोनित शाह 007 थैनोस एट gmail.com, ये मत कर देना। कैन यू सी मी एट gmail.com, ये भी मत करना, ये अलाउड नहीं है। जॉन सीना को देख के कैन यू सी मी, ऐसा मत करना उधर कुछ भी। ओके। मोबाइल नंबर एंड नेम इन ईमेल सिग्नेचर होना चाहिए। कई बार सीवी देखने के बाद सामने वाला चाहता है कि आपसे कांटेक्ट करे, तो आपका मोबाइल नंबर और नाम ईमेल सिग्नेचर में होना चाहिए। पता चला रिगार्ड्स लकी केवलानी, अरे रिगार्ड्स लकी केवलानी कॉल नंबर सो एंड सो, तो पता चला बस पीएफए प्लीज फाइंड अटैच्ड ऐसा भी लिख के दे देते लोग। ऐसा नहीं करना है। एम आई क्लियर ऑन ऑल दिस? यहां तक कहीं कोई डाउट रिगार्डिंग सीवी? एनी क्वेश्चंस विच यू हैव? तो फिर आगे चलूं। ऑल ऑफ यू गिव मी अ गो अहेड बाय गिविंग अ थम्स अप इफ ऑल ओके। आपके एकेडमिक्स में लिखो ना, अगर किसी की रैंक आई है, आपकी रैंक आई है बेटा, तो आप ये लिखो सीए इंटर के अंदर जैसे आपके मार्क्स हैं, स्कोर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 400 आउट ऑफ 600 विथ एन ऑल इंडिया रैंक। वो ना ऑल इंडिया रैंक की होती है, ऑल इंदौर रैंक मत करते रहना, ऑल जबलपुर रैंक। फोटो इंक्लूड करना है केवलानी, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस, इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज योर चांसेस इट्स योर चॉइस। आप अगर किसी का, आप खुद एक बार बताओ, जब आप किसी का इंटरव्यू लेने वाले हो, आप खुद सोच लो आपके लेवल पे इंटरव्यू लेने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए ना किससे मिल रहे हो, और फोटो कौन सा जाके स्टूडियो में खिंचवाना है। एक व्हाइट बैकग्राउंड वाली दीवार पर खड़े होकर शर्ट पहन के फोटो खींचना है ना आपको, आपका फॉर्मल फोटो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दैट्स वन। एनी अदर क्वेश्चंस? प्रोजेक्ट्स तो मेंशन कर सकते हैं। व्हाट प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन काव्या, जल्दी से बताओ, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन? एजुकेशन में आप अगर बीकॉम परस्यू कर रहे हो तो आप लिखो ना बीकॉम यूनिवर्सिटी का नाम और उसके बाद परस्यूइंग। हाँ, और अगर आपने किसी सीएस फर्म में इंक्लूड किया, काम किया हुआ है, तो आप लिख सकते हो, और वहां पर अगर आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दें तो नथिंग लाइक इट। अगर आपने 2-3 महीने काम किया हुआ है, आप लिखो ना उसके अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप टेक्निकल स्किल्स में लिख सकते हो वर्किंग एक्सपोजर या वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 months एट ABC एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये एक्सपेक्ट करना कि इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा कब से कर रहे हो, क्या करा है वहां पर,
समझे? हाँ, अब अगर किसी एक बच्चा बोलता है सर मैं इंडियन आइडल के ऑडिशंस में गया था, हाँ तो आप वो को करिकुलर्स में लिख सकते हो, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द ऑडिशंस ऑफ इंडियन आइडल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। स्टॉक मार्केट का एनएससी रजिस्टर्ड फर्म से कोर्स किया तो वो डालो, यू शुड हैव दैट सर्टिफिकेट, कल को वो पूछेंगे तो आपको बताने का। ओके, सो दैट्स वन। आई थिंक सीवी इज मोर और लेस सॉर्टेड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगर आप सीवी, मैं इंदौर में काफी फर्म्स के लिए सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर गेटिंग इनटू अ सीवी, मतलब आप फिजिकली सीवी देने जा रहे हो, जो मेरे हिसाब से इंदौर फर्म्स में मेल कर दो, पर जाना चाहिए। जितने भी बच्चे इंदौर जैसे शहर में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, हाँ अटेम्प एक तो जितने भी आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखें, आप मेल भले कर दीजिए, बट यू आर इन अ हॉलीडे टाइम, इट्स बेटर टू गो एंड गिव योर सीवी। और जब आप सीवी देते तो एनवलप पे ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर मैं सीवी सिर्फ प्लेन पेपर पे एनवलप में जाऊंगा तो नहीं, सीवी ऑफ दीपक मूलचंदानी बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड, मतलब सामने वाले को खोलने से पहले पता है कि मैं कौन सा सीवी ओपन कर रहा हूं, विच विल हेल्प हिम। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स करके अपनी चांसेस को और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? बिकॉज यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रिक्रूटर इन फ्यू मिनट्स, करेक्ट? ओके। और मैं इंदौर वाले बच्चों को बोल रहा हूं अभी से, जो जो इंदौर में आर्टिकलशिप ट्राई कर रहे हैं, आप प्लीज ये ध्यान रखना कि आप लोगों को कम से कम 10-12 फर्म्स में जाना रहेगा, और जाकर उसके बाद फॉलोअप भी करना रहेगा, और अपने फोन्स पे उन नंबर्स को सेव करके रखिए जो फर्म ऑफिस से आते हैं, करेक्ट? या ओके, अगेन इन दिस वन, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कब कब क्लियर किया ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो पूछते हैं तो आप बताओ, और अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है तो लिख लो, और अगर मल्टीपल अटेम्प्ट है तो आप मत लिखो, वो पूछेंगे तो बताना। वो तो आपके सीए फाउंडेशन पासिंग और इंटर के एग्जाम के बीच में इतनी देर में समझ जाता है आदमी कि अगर आपने मई 24 में दिया तो नवंबर 20 मई 25 में आपने इंटर दिया होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्मॉल सिटी एंड बिग सिटी। कोई क्राइटेरिया नहीं होता मिस्टर केवलानी फॉर फ्रेशर। ज्यादा इंटरनेट पे गलत गलत लेक्चर देके, गलत गलत वीडियो देख के खुद को परेशान न करें। अटेम्प्ट लकी बंसल अगर आपने स्किप करा है तो उनको बताओ दैट आई डिड नॉट अपियर फॉर दिस एग्जाम, एंड वो रीजन पूछेंगे तो रीजन बताना। और कृपया करके ब्लफ मत करना, कृपया करके झूठ मत बोलना वहां पर। ओके। स्मॉल सिटी बिग सिटी के अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं? प्रोज मतलब फायदे, कॉन्स मतलब नुकसान। स्मॉल सिटी में सबसे पहला आपका रिडक्शन इन ट्रैवल टाइम है, घर की सुविधाएं उपलब्ध है, नो स्ट्रगल फॉर बेसिक्स, लॉन्ड्री, फूड, मेडिसिन। यही सारी चीजें जाके बड़ी सिटी का स्ट्रगल बनती है। समस्या छोटे शहर की क्या रहती है? लिमिटेड एक्सपोजर, इंटरेक्शन विल बी लिमिटेड, एंड हम लोग थोड़े से लेड बैक कल्चर में होते हैं, यहाँ पर हमको हमारे दोस्त यार मस्ती और खोरी करने के लिए बुलाते रहते हैं, तो फिर हम मेहनत कम करते हैं। तो जो छोटे शहर के फायदे हैं वो बड़े शहर के नुकसान हैं, जो बड़े शहर के नुकसान हैं वो छोटे शहर के फायदे हैं। समझ में आ गया? तो जो जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्टल्स में रह रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन के लिए इंदौर में, तो उनको शहर बदलने में दिक्कत नहीं जाएगी। जो बच्चे आज तक घर से नहीं निकले हैं, उन्हें ये देख लेना चाहिए कि उन्हें ये सब चीजें बाहर जाके खुद करनी होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा वो इन चीजों में इन्वेस्ट होगा। और अगर आप सोचते हो मैं हर चीज की सर्विस ले लूंगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम एन एक्सपेंसिव अफेयर। आप बड़े शहरों में रहोगे, वहां आपका खर्चा भी अच्छा खासा होगा, करेक्ट? हेलो, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्मॉल सिटी वर्सेस बिग सिटी? अदरवाइज आई विल गो फर्दर।
ऑल गुड सर। लार्ज फर्म वर्सेस स्मॉल फर्म, फर्म में डिफरेंस आएगा यशस्वी। अगर आप बॉम्बे में हो तो बॉम्बे में जो टॉप नॉच फर्म्स ऑफ इंडिया है वो हैं। इंदौर में भी बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स है, पर आप बोलो बॉम्बे कल्चर पूरा इंदौर में मिलेगा नहीं। और कई बार बॉम्बे कल्चर में भी स्लो मूविंग का आपको फर्म्स मिल जाएंगी, इंदौर में भी आपको फास्ट मूविंग मिल जाएंगी। ओके, व्हेन यू एंटर इनटू अ लार्ज फर्म, आप बड़ी फर्म में जब एंटर होते हो तो आपका एक्सपोजर किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर लिमिटेड रहेगा। लार्ज फर्म में आपको ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है कि वो आपको थोड़े दिन ऑडिट कराएं, थोड़े दिन टैक्स कराएं, थोड़े दिन ये कराएं, ऐसा होता नहीं है। ओके, बेसिकली बड़ी फर्म्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड मिलेंगी आपको, अश्योरेंस एंड टैक्स। अश्योरेंस वर्ड कुछ और नहीं होता, ऑडिट वर्ड होता है। ऑडिट करने के लिए दो कैटेगरी बनती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का दूसरा नाम होता है रिस्क एडवाइजरी। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? यस, फॉर जॉब्स आफ्टर सीए डज इट मैटर फ्रॉम वेयर वी हैव डन आर्टिकलशिप? अगर आपने आर्टिकलशिप बहुत अच्छी जगह से करी है तो सामने वाला मान के चलता है कि आप 2-3 साल तैयार हुए हो उस चीज के लिए पूरा, सो यू आर वेल ग्रूम्ड फॉर अ लार्ज एक्सपोजर। ओके, सो नाउ आई विल टेक थिंग्स वन बाय वन। ऑडिट में देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। हेलो, यू आर अवेयर ऑफ इट? सर इसी को पढ़ के पास हुए हैं ऐसा मत बोलो। यस और नो? करेक्ट। इंटरनल ऑडिट इज समथिंग वेयर यू डू रिस्क एडवाइजरी वर्क। रिस्क एडवाइजरी वर्क के अंदर यू बेसिकली ट्राई टू वर्क फॉर अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द कंपनी। सो द कंपनी में आस्क यू टू डू समथिंग कॉल्ड क्लॉज 49 और आईएफसी रिलेटेड वर्क। ऑडिट के पेपर में आईएफसी पढ़ा था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, कुछ ऐसा याद है? क्लॉज 49 ऑफ सेबी। यहां तक क्लियर? अब स्टैट्यूटरी ऑडिट आपने पढ़ा है कि मेरे को एक रिपोर्ट बनानी है, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स ओपिनियन होता है। ठीक है, आपने कारो रिपोर्टिंग भी पढ़ा है। कारो रिपोर्टिंग के पॉइंट्स में आपने ये पढ़ा है कि सर मेरे को एसेट्स पे कमेंट करना है कि एसेट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, ये सब चीज़ें आप कारो रिपोर्टिंग में करते हो, करेक्ट। अब जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट लार्ज कॉर्पोरेशन में जाओगे तो वहां पर अगर आप फिक्स एसेट कर रहे हो तो आपको फिक्स एसेट की ही पूरी डिटेलिंग रहेगी। नाउ इफ आई हैव गॉट 20 फैक्ट्रीज, so before writing anything in my Caro report, I need to go to those 20 factories, or I need to ensure that the records are maintained everywhere in those 20 factories. So for every single point of Caro, you may be finding out that a single article is being involved and committed कि ये फिक्स असेट का ही काम कर रहा है, ये रेवेन्यू को ही देख रहा है, ये एक्सपेंसेस ही देख रहा है, ऐसा हो जाता है वहां पर। ओके, इंटरनल ऑडिट में प्रोग्राम ऑडिट का कौन देता है? क्लाइंट देता है। क्लाइंट बताता है कि हमें क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम करवाना है हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो वहां पर यू डोंट गिव अ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, इट इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इट इज एन ऑडिट। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको असीम सर की टीचिंग्स याद हो तो, इफ यू रिमेंबर, एन ऑडिट बाय द मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑफ द मैनेजमेंट, बराबर? रिमेंबर, ऑडिट बाय द मैनेजमेंट, फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑफ द मैनेजमेंट। हेलो, तो कौन सा प्रोग्राम फिक्स्ड होगा या कौन सी रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स्ड होगा? इंटरनल ऑडिट या स्टैट ऑडिट? जल्दी बताओ। किसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा जो कभी भी चेंज नहीं होगा? यस, दैट विल बी स्टैट ऑडिट, करेक्ट। हम्म,
अब आते हैं हम बात टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर दो होते हैं, डीटी और आईडीटी, करेक्ट। अब डीटी और आईडीटी की जब बात आती है तो डीटी के अंदर दो चीज होती है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है और एक होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। आप लोगों ने इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में सेक्शन 92 का रेफरेंस पढ़ा था क्या? तो सेक्शन 92 बीसीडीएफ में आर्म्स लेंथ प्राइस पे काम होता है। अब जो मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करना रहती है, तो देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, तो उसमें आप वो काम करते हो। इसके बाद यू ऑल्सो गेट वन मोर डिपार्टमेंट हियर कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स विल डील विद टैक्सेशन ऑफ कंपनीज. So how a company income tax return goes, all the clauses, all the applicable deductions or everything that is computed, तो उसकी वर्किंग होती कॉर्पोरेट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। फिर इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट होता है पीपल एडवाइजरी सर्विसेज, या इसको ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े महीने इंडिया में काम करते हैं, थोड़े महीने दूसरी जगह काम करते हैं, तो उधर रेसिडेंशियल स्टेटस का मैटर आ जाता है और टैक्सेशन ऑफ देयर सर्विसेज is in very different category. So multinational companies give these services to high flying corporate employees who are working various parts of the country or various parts of different countries. So the residential status will determine the taxability of income. So that will be called पीपल एडवाइजरी सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या होता है, यू आर ओनली लिमिटेड टू योर एनआरआई टैक्सेशन इफ यू आस्क मी। कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर यू आर कन्फाइंड टू कंपनी टैक्स एस्पेक्ट्स, बट कंपनी के अंदर टैक्स एस्पेक्ट जितने ज्यादा होते हैं उतने किसी और में होते नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड गेट कवर्ड हियर। आईडीटी के अंदर आप जब जीएसटी में जाते हो तो जीएसटी के अंदर दो डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, एक लिटिगेशन डिपार्टमेंट और एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट। लिटिगेशन वर्ड समझते हो बच्चों? Yes, litigation is where you try to draft appeals, give responses, and work for the client. Valuation issues, all these things will get into the litigation aspect. Compliance means GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी जो रेगुलरली आपके केसेस, मतलब आपकी जो रेगुलर रिटर्न फाइलिंग है डे टू डे ऑपरेशंस उसमें है। तो अगर आपको कोई आईडीटी में आर्टिकलशिप देता है तो योर क्वेश्चन शुड बी, विल आई बी इन द लिटिगेशन टीम और विल आई बी इन द कंप्लायंस टीम। इफ यू आस्क मी, कंप्लायंस टीम में सीखने के लिए थोड़ा सा कम मिलेगा, कंप्लायंस टीम विल बी मोर मोनोटोनस, लिटिगेशन विल बी चैलेंजिंग। ओके, तो ध्यान रखना। आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जाते भी हो, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी जाते हो, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर उनको पूछना, उसमें भी एक कंप्लायंस होता है जिसमें वो टीडीएस रिटर्न भरवाते रहते हैं। आप पूछ लेना, बोलना आई विल बी अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस टीम और द वर्किंग टीम। कंप्लायंस टीम का पार्ट कम बने तो ज़्यादा अच्छा है, because that gives you a limited exposure, and once you become an expert in one thing you don't easily get transferred to another departments. एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, is it possible that if out of 2 years of articleship I spend 10 months here, I spend 8 months here and I spend 6 months here? आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हो या आर्टिकलशिप देने वाले को अपने यहाँ पे रख रहे हो, ये बता दो। Are you going for articleship or are you appointing CA firms for your articleship? सोच के जवाब दो। Sir, we are appointing the CA firms for articleship, or how is it?
सर यू आर गोइंग फॉर, अब आप बताओ ना, इफ यू आर द बिजनेस ओनर, यू ट्रेन वन रिसोर्स इन वन कैटेगरी एंड वन कैपेबिलिटी, देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट रिसोर्स इन अनदर कैटेगरी. इज दिस पॉसिबल? सर नो. हेलो. करेक्ट. सो बॉस, ये ध्यान रखना, आप इधर उधर जा नहीं सकते हैं. काव्य अभी तो बोला ये चेंज नहीं होता है, वो आपको नहीं चेंज करते, खासकर लार्ज फर्म्स में तो नहीं करते. लार्ज फर्म्स में बिल्कुल भी नहीं होगा. वो आप करोगे भी तो बोलेंगे नहीं कर सकते हम. ठीक है. अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन. सर मैं एक काम करता हूँ, 6 महीने बड़ी फर्म में जाता हूँ, मैं एक्सपोजर ले लेता हूँ, फिर मैं अपने शहर में आ जाऊंगा. जब तक सीखना चालू करोगे, जब तक रिदम में आओगे, उसके बाद तो तुम सीखोगे. नहीं, स्टिक टू वन फर्म, बिकॉज शुरू के 1-2 महीने में वाइब समझ में आ जाती है कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा. और इमीडिएटली जब भी ना ज्वाइन करो, डे वन पर आपके फॉर्म 108, 102 और 103 साइन मत करो. 5-10 दिन आप भी खुद को टाइम दो, 5-10 दिन सामने वाले को भी देखो, वो आपको झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा, और आप उसको संभाल पा रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे हो. Because most of the times the vibe doesn't match and then people start working here and there. Just wait for that time. My sincere suggestion is, boss, you have done CA intermediates, but your CA final is pending. Okay. So in order to pursue CA final, please understand one thing. You need all this. You need audit. You need taxation. You need company law. And you need FM. You need all together. ये सब एक साथ कहीं पे अगर होता है तो वो आपको सबसे बड़ा एक्सपोजर मिलता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में. और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर ही आपको टैक्स ऑडिट भी मिल जाएगा. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो सब चीज कवर हो जाती है, तो आपको सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा. सो इफ यू आस्क मी, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस सर, इट शुड बी स्टैट्यूटरी ऑडिट, बिकॉज दैट इज व्हाट सीएज आर मेड फॉर. हम बने स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए. Now, when somebody saying learning one work in article is hindrance to job in future. Before the job in future, Mr. MIM2004 J19C, that's your name. Mother of Vivo or Oppo, I don't know. Your father of Vivo Oppo, your son of Vivo Oppo, I don't know. Learning to one work in article hindrance to job in future. Before your work is articleship and your job in future, there lies something called CA final. Okay. So I am first of all more concerned on clearing CA finals rather than simply thinking for a job. My simple answer is, for finals you have got 4 SPOM modules, self-paced online modules, 6 papers you have, so 6 plus 4, 10. You are supposed to clear 10 exams before becoming a chartered accountant. एंड अगर आपका काम आपको वो सब सिखा रहा है जो आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपके लिए आसान होता है. प्रॉब्लम क्या होती है? If you get into certain kind of unique positions where you are happy about the corporate, you are happy about the environment, you are happy about the company, but क्या होता है वहां की रौनक में आप ये भूल जाते हो कि you have an exams after 2.5 years. मैंने बहुत सारे बच्चों को भटकते देखा है. करेक्ट. सो माई सिंपल एंड सिंसियर रिक्वेस्ट इज, my simple request to all of you is, first of all, target your CA finals, that statutory audit. If you get that department, nothing like it. Okay. Then otherwise internal audit. And if you are into mid-sized firms, you will be able to do multiple work. You will be doing some partnership assessment, you will be doing some income tax, you will be doing some audit work also, you will be drafting appeals also, you will be doing some GST work and TDS work. And if you ask me, before selecting any food what to eat in a buffet dinner, I would like to try all. So articleship should be a place where you should be able to learn as many things as possible. You should be able to do some work called P2P, pune to partner. So my point is this. I have a question from Harshvardhan. Sir, I want to become an investment banker after completing CA. So while choosing articleship, which domain should I concentrate and what kind of company should I apply? First of all, again the answer goes back to this only. To become an investment banker, a chartered accountant needs to have a wholesome experience.
Now, the moment I say the word wholesome experience means you need to know about the financials of the company, how the financials are made, how financials are prepared, and how they are presented. So the biggest exposure or the most holistic exposure you will get it in statutory audit. My point is, if you are becoming a chartered accountant, it's as simple as, if you don't understand the human anatomy of any human body, how can you pursue MBBS? How can you become a doctor? So similarly, unless and until you know how what chartered accountants do and can do, how will you be able to develop yourself further? And I want to remind you once again that before entering and becoming an investment banker, you have a CA final exam. And my focus would always be that CA final exam should be cleared in one shot, because after 2 years of articles, you will get clear 6 months. In those clear 6 months, you should prepare so well that you should crack the exam in first instance. Because the moment that thing goes for a toss, then getting into that loop of every 6 months, not able to clear, doing further, not able to clear, that will be a problem. Okay, so that's one. Is that clear from my side? All of you, can you give me a thumbs up? Okay, very good. Now, few confusions to be clarified. You will never get articleship in EY. You will get articleship in SR Bartley Boy, because the Indian firm name is SR Bartley Boy. You will never get an articleship in PwC. You will always get an articleship Lovelock and Lewis, PwC CA LLP, PwC Co. Okay. You will never get an articleship in KPMG. You will get an articleship at BSR and Company, Bharat S. Raut and Company. And you will never get an articleship in Deloitte. You will get in Deloitte Huskins and Sales, which is an Indian firm. So these are brand names, but you will be registered under firm names. Okay, brand names and firm names, ये difference आएगा. So now you have cleared your exam in September 24. Okay, so when will you get your exam? You will start your articleship in October. Okay, November चालू हो गया. So November 24, November 25. Correct. So when will your exam fall in now? You tell me. Sir, October 26 is something which you will be completing your 2 years of articleship. Okay. So you will get the exam in May 27, if I am not wrong. It will be either May or November 27. Am I correct? May 27 नहीं आएगा, because 6 months नहीं होंगे तुम्हारे आर्टिकलशिप को. Yes, it will be November 27. Correct? So November 27. So till November 27 you need to plan your studies. You need to work properly. So basically क्या होता है, 31st को अप्लाई करने से अनमोल कुछ नहीं होता है. आई नो यू ऑल गॉट मिसगाइडेड बाय दैट सिंगल ट्वीट दैट इफ यू वांट टू सेव 6 months, get applied on 31st October. My point is, even if you advance yourself, you will compromise on the work X. मैं वही समझा रहा हूँ अनमोल. Look at this. July, August, September gone for you. बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, बिजी सीजन और रिटर्न फाइलिंग टाइम कौन से होते हैं, और ऑडिट का सीजन कब से कब तक रहता है, बताओ. ये गॉन है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप काम करोगे. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इज वन बिजी सीजन विच यू विल सी. ओके. सेकेंड ईयर खत्म करते करते आप ये सोच रहे हो, तो आपका ईयर 1 खत्म होगा यहाँ पर और ईयर 2 खत्म होगा यहाँ पर.
Now tell me one thing, at least 2 busy seasons you should see as a trainee. How returns are filed, how audits are done, how financial statements are prepared, how filing is done. Do you really think एक साल में आप सब सीख जाओगे? If somebody has also applied for May 27, तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी दौड़ लगाएगा, फिर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काम नहीं करेगा, वो बोलेगा सर मुझे छुट्टी दो, which will not be beneficial, which will not help you. इंस्टीट्यूट ने कुछ सोच समझ के ही डिजाइन करा है. समथिंग हैज बीन डिजाइन्ड बाय इंस्टीट्यूट इन अ प्रॉपर वे. ओके. And 4 SPOMs will be there, self-paced online modules, correct? So if you go into bigger firms, okay, so then 9:30 a.m. is the reporting time and out time is not decided. So in time is decided, out time is not decided. And even in small firms, in month of July, August, September and October, you may work late. ये होगा. So be ready for all that kind of exposure. Just I'm taking a pause for a couple of minutes. So just wait. Okay. In the meanwhile, assess yourself and understand whatever the questions which you have. I'm just taking a pause for a second. Recording stopped. Yes. Any more questions which you have? I will like to give you answer your questions and then take up things further. Okay. I have one question, sir. I'm applying in different firms. Approximately 75% firms are saying no vacancy available. तो वहाँ जाके वॉक इन करने से कुछ हो सकता है क्या? आकांक्षा, आई एम नॉट श्योर. सबसे पहली बार आप लोग का सितंबर एग्जाम का रिजल्ट आया है. इस साइकिल के हिसाब से आपको वैकेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज यूजुअली आर्टिकलशिप वैकेंसीज गेट कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज जनवरी फरवरी मतलब फेब मार्च आर्टिकलशिप गेट्स कंप्लीटेड एंड देन इट गेट्स कंप्लीटेड इन अपना अगस्त सितंबर. तो दोज आर्टिकल्स हु आर गोइंग, those articles which are completing their articleship and going out of the firm, so right now there may be a situation that they may not have the vacancy also to take you. ये situation हो सकती है. So for that only I told you, you are not supposed to rely only on one place, you have to apply at multiple places. Okay. Anshul Sahu, I clearly gave you the pros and cons of big city, small city. I think you logged in late. This is big city versus small city comparison, the pros and cons. Self-explanatory. Okay. Okay, you are a CS professional student, so how can you apply to a big four? CS professionals do not do articleship under the ICI partner, so you can't. Simple. Contacting me for firms in Pune, I can tell you the names which are at my tips and at my hand. Let me just start giving those names. उससे पहले name देने से पहले I wanted to check with others. Are there any other questions left out? Did I miss out on any of the questions? What things can be asked in interview? First question, the things which can be asked in interview is your intermediate basics, balance sheet basics. In AS, they will definitely ask. What accounting standards you have done, basic entries of purchase and sales. I have got a sheet of accounting concepts and key audit concepts which I will circulate it in the Telegram group. So that don't worry about that. I will give you that material and you all can log on to this particular website which has got all the details. So this is the website which I am trying to tell you.
It is got set of all the questions. If I can just log in and show you, this is the website what I'm talking. Degree to placements. So interview preparation material, here is it. Here it is. You can have a look at it. It will have those Word files and PDF files which you can download and understand it. Okay. Yashasvi, you will be registered on the SSP portal, self-service portal of the ICI website, and there your record will be maintained that you are registered under which chartered accountant. So that SSP portal thing will help you. So every day you will be for signing a form 102, which is a deed of articleship, which is actually executed on a stamp paper, giving the duties and the rights which you have, and your principal who is going to give you training, the duties and the rights which he has. There is a legally binding kind of a thing which starts. So it's a very formal thing. So Lucky Bansal, I gave you this. Okay. Now how to get articleship in Big Four? In Big Four, taking articleship, one thing is there. I will circulate a Google form that you can fill up, but I will only collect the CVs and your details. I cannot guarantee that you will be interviewed or your CV will be directly taken. One way to apply there is to do some cold emailing. Cold emailing word मतलब समझते हो बच्चों? For example, ये PwC India, explore careers. Correct? So these kind of things. You want to apply, you want to have a career. ये देख लो भैया, उनके वहीं पे अवेलेबल हैं. फेक ईमेल्स आ रहे हैं, इन चीज का ध्यान रखना. और हाँ, यू आर नॉट सपोज टू पे अ सिंगल रूपी ऑफ मनी टू एनीबॉडी. प्लीज रिमेंबर दिस. नॉट इवन अ सिंगल रूपी ऑफ मनी इज टू बी पेड इन ऑल दिस. कोई आपको बोलता है वी विल गेट यू देयर, वी विल गेट यू अ क्वेश्चन, हम आपको इंटरव्यू करा देंगे, उसके पैसे दे दो. नो नीड. देयर आर पीपल सेलिंग कॉल्ड मास्टर क्लास फॉर आर्टिकलशिप. नो नीड. Everything, all those details are available here free of cost. Interview preparation material. For example, accounting concepts. If you open up, you will find all the accounting concepts from my side. Here it is. इसको पढ़ो, इनको समझो. जबरदस्ती कहीं बैठ के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है आपको. So you can download these things freely from my website. Seems to be a glitch. आपके यहाँ पे ओपन हो रही बेटा वेबसाइट? Are you able to download beta? Recording stopped.
इस प्रकार से डाउनलोड होती है ये चीज, ये देखो आप. आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चंस along with all the solutions. पीछे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स हैं. So you just need to read this, you need to understand all this, and then prepare for the interviews. So all the questions with all the answers are there. Yes, Ankit, English speaking is necessary and it is very much important. I would be saying wrong that if I can tell you that Hindi se kaam ho jayega. If you want to go to bigger places, yes, you need a fluent and a proper English. If you are aiming for bigger firms. Okay, so you need to send them emails and do not respond to general emails on LinkedIn or apply on forms. Everybody is trying to take your data to sell you CA final classes. Please understand this. Don't blindly apply anywhere. Somebody writes a post, वो पता चला is nowhere working in any of the big four and you are giving details to him. So slowly and gradually then people selling their CA final lectures will start reaching out to you. So you have to be understood that, okay, that your data should not be misused. Industrial training, lucky, is an optional thing, and industrial training again is a very short term kind of a course. If industrial training would have been very important, it would have been a part of your articleship tenure only. It's an optional thing. What I suggest is industrial training, they will only give you the work which an intern level work will happen. Under articleship, when you gain the experience in first year, that experience can be used better in second year rather than jumping onto industrial training. The stipend of industrial training will be very handsome. You will start getting videos over YouTube saying 40,000, 50,000 ka stipend. Please understand, till the time you become a chartered accountant, stipend has to be secondary for you, not the primary thing for you. Okay. Now there are various more fields also where people come up and say, this, please remember this particular notice which is coming. This is the official warning from PwC that PwC doesn't ask any money. None of the big four asks any money. Okay. So don't fall for this. Don't pay anywhere. This is the official website pwc.in.careers. Okay. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर कैन आई गेट इनटू M&A. नाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर आई थिंक आयुर्दा हैड दिस क्वेश्चन. इज आयुर्दा देयर? आयुर्दा, you are saying mergers and acquisitions. Mergers and acquisition में you try to work on the due diligence of either you are the buying company from the side of the buying company or from the selling company. So the buying company and selling company gives you a total timeline of few days or few weeks, and in that you have to do an overall assessment. It's a very high pressure kind of a thing where you assess the overall company, find out that overall consideration, and help the team to give that particular purchase price or the offer price. If you are from the sales side team, you will try to tell that this is these things what the buy side team is doing. Sales side team doesn't agree to this. So buy and sell team आप किस तरह से काम करते हो, that depends. One. Secondly, it is a very high pressure thing, and moreover, they take articles. I am a bit skeptical because usually in M&A practice, I have not seen much of the articles being there. And even if the articles go and work there, beta, what will happen is they will not be doing the cream layer work of understanding anything. Of a very bigger task, they will give you very small activities. You may feel great, but you may not learn that much, which after becoming a chartered accountant you can do. If you want to get into M&A tax, M&A mergers and acquisition division, let me tell you, all the big fours, when they come for M&A mergers and acquisition, strategic advisory or investment banking kind of positions, Harshvardhan, you also listen to it if you are there. What will happen is they look for very good statutory audit exposure in which they have done listed clients. So if you want to build your profile for future,
Then statutory audit exposure, and that too of listed companies, because the maximum level of compliance will come in listed companies. Listed companies statutory audit exposure is the best thing to become ready for any investment banker, merger and acquisition, financial due diligence, and all those things. And Ayurda and Harshvardhan, to make your understanding better, let me just show you this also. There is a particular PDF on my website about FDD, all about FDD, this one. So please read through that, all about FDD PDF. It will help you a lot. I have compiled some real good stuff on that and I am really happy about that. See, financial due diligence. There are certain myths about FDD which you need to understand and then take it further. It's a 5-pager only. Okay. So Harshvardhan, Ayurda, if you are aiming for something like this, go through this document first. पहले इसको पढ़ने का. Okay. Secondly, then go and understand all the accounting concepts also. That PDF is also there, which I have compiled and given to you. So both things combined, you will be able to approach them better. And I am still, let me say, I'm really skeptical that they will take articles in M&A division. And मेरा suggestion है, if you want to pursue anything like this, develop your first of all level playing field of statutory audit to the best level. That will help you a lot. Because you will be able to get a 360-degree view. जैसे you would have studied amalgamation. You try to calculate purchase consideration in classes. When you calculate purchase consideration, there are so many qualitative things which you have to keep in mind beyond the given data. So you then try to factor it and bring it in numbers that okay, contingent liabilities are these much, contingent assets are these much, these are the cases pending against the company, accordingly the earnings may take a hit. This now had to be discounted further. So all that kind of complicated calculation gets into your brain faster once you know the overall universe, and the overall universe is nothing but the statutory audits atmosphere. Okay. If you are learning statutory audit in a big four, it will help you a lot, and your CA final preparations will also become easy. And if you are doing an articleship from big four, getting a job will never be a problem. Correct? Any more questions which you all have, or should I start giving you the names of the firms? Firm names दे दूं मैं आप लोगों को, because big four के तो सबको नाम पता रहता, but big four के अलावा भी काम आपको करना पड़ेगा, and you have to make applications to other firms also. So if you फटाफट would like to note down the names or take screenshots, this is Indore. Okay. Maisi Solanki and Company, MCS, ABT Arora Bantia Tulsian, M Mehta and Company, Fadnis and Gupte, Gagan Jhamar, CH Padlia and Company, Anand Jain and Company, Barjatia and Company, Anand Agrawal and Company, Spark and Associates, KKC, that is Khandelwal Kakani, Dasani and Associates, AKG Anil Kamal Garg, Anand Saklecha and Company, SN Goyal, Vinod Runwal and Company, DK Saklecha and Company, MSMJ, I don't remember the full form. Abhishek Parwal and Company, Khasgiwala Company, Khasgiwala and Company, Khasgiwala and Company is of Atishay Khasgiwala, who is the present chairman of Indore branch. So these are Indore based companies, and please, this list is not exhaustive. This list is not exhaustive. हाँ, मेरे माथे मत आ जाना कि कहीं पे कि दीपक सर ने तो बाकी कोई बताया ही नहीं. When you go to Pune, let me tell you few names of Pune which you can take help of.
First is there is Kirtane Pandit, very old CA firm. BK Khare, JCSS. These are the few very well respected firms, and I have few more names. Just a minute, let me scroll through my phone. I have that. Uh, I'm just scrolling but not able to find. देयर इज नथिंग कॉल्ड विच इज द मोस्ट प्रेफरेबल फर्म्स. मैं पुणे फर्म्स और ढूंढ के आप लोगों को भेज दूंगा. मैं ऑल अबाउट आर्टिकलशिप. अच्छा, आर यू ऑल विद द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप ऑल अबाउट आर्टिकलशिप? आर यू ऑल अ पार्ट ऑफ इट? Otherwise, this is just a minute. I'll share that link with you so that you all can join that group because everything will come there. I'm just wondering where did the link go? Here it is. Yes. This is the Telegram group. Okay. So that will help you to understand about articleship requirements, which you can join and you can ask all those questions there also. And I will give you the list of articleship cities and the firms. In a day or two मैं उसमें post कर दूंगा आप लोगों के उसमें.
आई शेयर दैट, जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, पूना सब बड़ी बड़ी सीए फर्म्स के नाम है. दैट विल हेल्प यू. ओके. इन मुंबई फ्यू ऑफ देम आई कैन टेल यू. In Mumbai there is Big Four. In Pune also there is Big Four, and then there is BDO, then there is GT. Beyond that you have got Chaturvedi and Shah. You have got Mahajan and Aivera. You have got Khimji and Kumarji. You have got Bansi Mehta. You have got Bansi Mehta. You have got Mr. Malpani and Associates. Very big firms. So these are few of the names. Again, the list is not exhaustive. These are suggestive names. These are very famous names. Yes, you have got in Delhi, for example, you have got SS Kothari. You have got TR Chadha. Many other names. So which will help you. Okay. So two things you should have with yourself. Number one, to get all the updates. Number one, Telegram group, all about articleship, link shared. And second is website www.degree2placements.com. Okay. Arshvardhan, in Bangalore, you have got a JCSS, one very big firm, and there are very much senior firms. PKF Sridhar Santanam, Iyengar and Company, a lot of the firms. Akanksha Delhi, Gurgaon is same. So SS Kothari, TR Chadda, all these big firms. Okay. So I'll be sharing this list with all of you so that it will become helpful. Okay. Any further questions which you all have? Yashasvi self-paced online modules is as simple as that you have got 4 subjects जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है. आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करके एग्जाम दे सकते हो. सो आपको 6 पेपर तो सीए फाइनल के देने और 4 अलग सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन एग्जाम्स दे के करने पड़ेंगे. सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, SPOM. Going to internal audit departments will be equally good also, so don't worry on that. Okay. स्टैंडर्ड टाइम टू अप्लाई बेटा आपको टाइमली कर देना चाहिए, क्योंकि फाइनल का एग्जाम नहीं खसके. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज द मोर यू डिले, सो लाइक इट्स 5 days इन द रिजल्ट नाउ, अगले 10-15 दिन में रजिस्टर हो जाओ. दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप ऑन टाइम इन 2026, because once you complete in 2026 you will get time. So even if you do some chutti, you extend it, so then what will happen is it will get spill over and come to January 27. So January 27 to November 27 you will have time. Okay. Astha references in what sense? You somebody knows you in Big Four, you know someone in Big Four, you send a CV. You can send a CV, not a problem. All those who are doing ITOC, start applying for articleship and tell them that we are available in evening hours after our OC training for interview. Don't wait till for 2 months and then start doing on it. ऐसा मत करना. Don't do that.
ITT परस्यूइंग लिख दो बेटा आयुर्दा. Pursuing ITT due to complete on this date, available for joining on from this date onwards. ऐसा. So don't wait for that, because what will happen is till that time it should not happen that articleship vacancies get full. Okay. Anything else you all want to ask, or should we complete the session? आकांक्षा, I'll repeat once again, अक्टूबर 31 तक आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप मई 27 दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट होगा वही कि आप ना काम पे ध्यान दे पाओगे ना पढ़ाई पे, तो ये जबरदस्ती का ऐसा जुगाड़ करने का कोई जरूरत नहीं है. बट स्टिल, बेस्ड ऑन द tweets and suggestions by so-called people, if you want to do, you do. Now it all depends that what kind of a firm you have registered in jalbazi. Any more questions? Kavya, my again the response is subject selection SPOM does not relate to your job. Your job will be given to you not because of one subject but because of your degree as a chartered accountant. No point asking that whatever I choose in SPOM will make a difference in job. No, because SPOM 4 subjects and then 6 subjects of CA final combined together will make you eligible a chartered accountant. So don't try to get into this situation कि ये कर लूँ वो कर लूँ तो क्या ही होगा. Nothing. Okay. So rather than saying it's a very helpful session here, when I post this video, you are supposed to go and comment on the video that it was a useful session, because that will help. So this will be up and going by tonight or tomorrow afternoon. That this session will be available on YouTube also. There you go and put some comments so that we get understand. Okay. Thank you very much. God bless all of you. And I hope to see you all as a chartered accountant and then helping you out in getting the jobs. If you remember and if you know that I help people getting jobs also. So that is the next stage after 2 years from now. And once you become a chartered accountant, complete your CA, then you can come back to me and then we'll have sessions to understand how to apply for jobs. Okay. So expecting all of you to comment on my video once it's there on the YouTube. नए जमाने की requirements, चलो. Thank you very much बच्चों. God bless you. Recording stopped.